हेलो गाइस, हाउ इज गोइंग? आई होप एवरीथिंग इज़ वेल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का सिंपल पेपर, जो कि सेशन जो है 2023 टू 2024 का है। ठीक है ना? इस मतलब अलग अलग सेशन का भी रहता है, जैसे 2022 का 2020 ऐसे सेशन अलग अलग रहते हैं, जो कि ये प्रेजेंट का सेशन है। ठीक है ना? तो हम अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर और कुछ बातें होगी जो चैप्टर के साथ ही होगी। ठीक है ना? चलते जाएंगे और यू कैन सी दैट वन। ओके ना? तो द HCF एंड LCM ऑफ द 12, 21, 15 रिस्पेक्टिवली आस, ओके ना, यहाँ पे दिया है आपको। अकॉर्डिंग टू दैट वन यू कैन बी चूज इट आउट फ्रॉम द, ओके राइट। So we are not going to see the answer. Okay, now we directly see the question, because if I show the answer, the time is going to waste, because you are fortunately your exam is very near, and if you see that question answer, then if you have idea about the question, then definitely you will find out your answer. ठीक है ना? ओके, तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा। ठीक है ना? कुछ डाउट नहीं होगा। I hope you don't have any kinds of doubt on this paper. Okay, so try to solve this paper. Okay, I'm sorry, actually, my screen is blurring sometimes. When you are recording in computer, then suddenly the mouse is clicked on the left or right, so it is going to be happen. Okay, na? Right, so we are going to see. Okay, so here it is 70 to 91. It is all right. And then here you can see. And then that's one. All right, we are going to be, and evaluate. Here is it. You can see this 24 question is there. 5 cos 2 60 degree plus 4 cos secant, that's secant 2 30 degree, and tan square 45 degree, sin square 30 degree plus cos square 30 degree. You can see that one. Otherwise prove that. Okay na? Provement question is very very important. You remember that one. Definitely they will ask you a long question for the provement. They will be 8 marks, or maybe it will be 8 marks only 7 marks according to that. Okay na? Is it clear? Find the acute angle of theta when cos theta and sin theta by cos theta plus sin theta equals to 1 by root 3, 1 by 1 plus 2 root 3. Alright, so मेरे ख्याल से आप लोगों को कुछ समझ में तो आ रहा होगा ना कि पेपर कैसा है। अगर आपने सही में, अगर 10th क्लास का अगर आपने सही से प्रिपरेशन किया है ना, तो यार दिस पेपर इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी। ठीक है ना? पेपर जो है वो बहुत इजी है, क्योंकि जहाँ तक मैंने इस पेपर को देख रहा हूँ ना, तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पहली बात क्योंकि आई एम इन बेसिक, सो दैट्स वाई मतलब समझ में आ रहा है, लेकिन अगर आंसर फाउंड आउट करने के लिए मैं कर दूँ, आई कैन डू दैट वन। ओके ना? दैट्स डिपेंड ऑन द एटीट्यूड and that's my ego. I don't know, but I can find out. Don't worry, I'm a studying engineering mathematics. Okay, right, is it clear? I hope is it clear for you, and I hope you don't have any kinds of doubt. मतलब ये जो पेपर है आपके लिए क्लियर गया होगा, कुछ डाउट नहीं होगा। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। आपका एग्जामिनेशन जो है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, एंड आप ट्राई करिएगा अच्छे से लिखने के लिए। ठीक है? अगर आप वीक स्टूडेंट हैं मैथमेटिक्स में, तो भाई फिर हम कुछ नहीं कर सकते, आप अपना देख लीजिएगा। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि नेक्स्ट टाइम पढ़ना, ठीक है, छोड़ मत देना, क्योंकि वीक है तो स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करना, और कुछ नहीं, मेरे जैसे। ठीक है? राइट, सो वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।